गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट केस ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। टॉपिक आपका सोशल इश्यूज और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक क्रिटिकल केस को डेलिब्रेट कर रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर, जो कि इतना इंपॉर्टेंट केस है लेकिन उस पर अभी तक बहुत ही कम प्रोग्रेस देखने को मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इस पर कोई ज़्यादा कमिटमेंट दिखाई नहीं है इस एक्ट के ऊपर। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? इसको पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जो है राम टेम्पल की हाइट पर जो है वो लाए थे, और इसमें मैंडेट किया गया है कि जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं एक्सेप्ट अयोध्या, वो उसी स्टेटस पर रहेंगी जैसा 15 अगस्त 1947 के टाइम पर थी। मतलब उनको हम कन्वर्ट करके किसी भी और रिलीजियस कैरेक्टर में नहीं लेके आ सकते। जैसा रिलीजियस कैरेक्टर आज़ादी के टाइम पर था वैसा ही रहेगा। तो लोगों को भी इसमें जो है वो सूट्स फाइल करने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, और 2019 में भी जब अयोध्या जजमेंट आई तो कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रिवेंट कर रहे हैं हम नॉन रेट्रोग्रेशन, ये हमारी सेकुलर वैल्यूज़ के लिए एसेंशियल फीचर है। लेकिन पटिशनर्स का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि इससे हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स जो है उनको राइट टू रिक्लेम देयर प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और उनके हिस्टोरिकल इन्वेजन से जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं, वो उसमें ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है ये अटैक, ये एक्ट। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है कि ये एक्ट जो है वो सेक्युलरिज्म और फ्रेटर्निटी दोनों को अपहोल्ड कर रहा है। ठीक है, और हम रीसेंट केसेस में देख रहे हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो अपना एक रोल दिखा रहा है, चाहे वो अजमेर शरीफ केस हो, फिर आपका शाही जामा मस्जिद संभल का केस हो, ज्ञानव्यापी केस हो, शाही ईदगाह केस हो। ठीक है, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो सर्वेस करवाए जा रहे हैं ये एक सिस्टमैटिक प्लान है ताकि इंटेग्रिटी रिलीजियस साइट्स की जो है वो चैलेंज की जा सके। मुस्लिम पार्टीज़ का कहना है कि कोर्ट्स को इस एक्ट को इन्फोर्स करना चाहिए ताकि फ्रिवलेस क्लेम्स जो है वो रोके जा सकें। इवन जो उस समय सीजेआई थे, उन्होंने भी कहा कि बैलेंस करना फेथ और लीगैलिटी के बीच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है बेसिकली एक ब्रॉडर कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस के बीच में, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं सेकुलरिज्म और यूनिटी की, उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉल आउट्स इन बांग्लादेश। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली चिन्मय कृष्ण दास, हमने देखा कि उनको अरेस्ट कर लिया गया ढाका में और उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग को। तो बांग्लादेश एक एंशियंट हिंदू और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को होस्ट तो करता है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन को भी होस्ट करता है, बट वहाँ पर सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन किया जाता है माइनॉरिटीज़ का। खासकर ये कब सबसे ज़्यादा बढ़ा, जब खालिदा जिया जो है प्राइम मिनिस्टर थी 1991 में। ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया और एक बांग्लादेश हिंदू बौद्धो क्रिश्चियन ओकियो परिषद बनाया, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन और एट्रॉसिटीज़ जो उनके ऊपर हो रही हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। बट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसको इशू को एड्रेस ही नहीं किया। ठीक है, और इवन जो हम अब देख रहे हैं, जो सबसे रेडिकल गवर्नमेंट आई है यूनिस गवर्नमेंट, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो परसिक्यूशन किया जा रहा है उनका। तो चिन्मय कृष्ण दास को, जो कि मेजर रैलीज कर रहे थे माइनॉरिटी राइट्स को के फेवर में, उनके ऊपर जो है वो एक स्पूरियस चार्ज लगाकर सेडिशन का उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो है यूनुस जो है उन्होंने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। लेकिन हमने रियलिटी में देखा है कि कैसे अटैक्स हो रहे हैं टेम्पल्स पर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स पर, और गवर्नमेंट जो है वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है रिस्टोर करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को। तो यूनिस गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लेकर आ रही है जो कि माइनॉरिटीज़ को और ज़्यादा डरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया गया था 2011 में, उसको हम हटा देंगे क्योंकि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो है वो अलाइन ही नहीं करते ऐसी कंट्री में जहाँ पर डेमोग्राफिक रियलिटी ऐसी है कि 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है। ओके, तो गवर्नमेंट जो है वो डिसमेंटल करना चाह रही है बांग्लादेश के सेकुलर फ्रेमवर्क को। इस जो अरेस्ट के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी डिप्लोमेटिक स्पैट बढ़ गया, और इंडिया ने जो है बांग्लादेश को कहा कि आप सेफ्टी ऑफ हिंदूज़ को इंश्योर करो। बांग्लादेश ने इंडिया को मिस रिप्रेजेंट करने के लिए कहा बांग्लादेश ने इंडिया को अक्यूज़ किया कि इंडिया मिस रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्ट्स को। इस्कॉन के जो सपोर्टर्स हैं कंट्री वाइड इंडिया में वो प्रोटेस्ट करने लगे। डिप्टी हाई कमीशन जो है बांग्लादेश का, वहाँ पर भी जो है प्रोटेस्ट हुआ कोलकाता में। तो एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें, जिसमें कि यूनिस गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश की जो के ऊपर जो पॉलिसी है इंडिया की, उसके एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है इंडिया के लिए। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया को क्रिटिसाइज़ करता है कि वो शेख हसीना को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों उन्होंने होस्ट किया है। और इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं
जैसे कि अदानी ग्रुप का गोडा पावर प्लांट प्रोजेक्ट, वो भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यूनिस गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि स्टेबल है, वो भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी फेस कर रही है। और जो रेडिकल जमात इस्लामी टेररिस्ट हैं, जो एंटी इंडिया पॉलिटिकल पार्टी है एक्चुअली, इन द ने जो टेररिस्ट हैं वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के शेप में है वहाँ पर, वो भी जो हैं वो वहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं यूनिस गवर्नमेंट को, क्योंकि वो कई उसमें से एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिस गवर्नमेंट को बैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिलिका। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो प्रिपेयर करें डिटेल पैन इंडिया गाइडलाइंस सिलिका सैंड माइनिंग की और सिलिका वॉशिंग प्लांट्स की। सिलिका एक नाम है केमिकल कंपाउंड का, जिसमें कि सिलिकॉन ऑक्सीजन होते हैं, जो कि 59% ऑफ सिलिका जो है अर्थ का क्रस्ट वो सिलिका से ही बना है। सिलिका सैंड जो है वो यूज़ की जाती है बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने में, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करने में ग्लास और स्टोन की। सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है एज अ डेसिकेंट मॉइस्चर को रिमूव करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो साइंटिस्ट हैं हेस ऑब्जर्वेटरी के नमीबिया में, उन्होंने जो है वो हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज जो है वो फाउंड की हैं। तो ये जो हेस ऑब्जर्वेटरी है, ये चेरनकोव टेलीस्कोप्स जो कि खोमास हाईलैंड्स नमीबिया में लोकेटेड है, वहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी है 2003 से काम कर रही है, बहुत सक्सेसफुली ऑब्जर्व करती है गामा रेज को। और ये सदर्न हेमिस्फेयर में होने की वजह से बहुत ही वेल लोकेटेड है, क्योंकि गामा रेज जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती अर्थ के एटमॉस्फेयर को, तो इसलिए जो है हम उनको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं कि जिस तरह से वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। जो ये हेस ऑब्जर्वेटरी है ये 260 साइंटिस्ट से भी ज़्यादा के कोलैबोरेशन से ऑपरेट कर रही है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हांडी गोडू डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है कर्नाटका के, उन्होंने रिसेंटली हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका को कहा है कि एक साइंटिफिक स्टडी की जाए हांडी गोडू डिसीज़ की कर्नाटका में, ठीक है। तो हांडी गोडू एक एक तरह से रेयर और पेक्यूलियर ओस्टियो आर्थराइटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि ये शिमोगा और चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका में ज़्यादातर पाई जाती है। एक इनहेरिटेड डीजनरेटिव ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी है ये। इसमें मतलब बेसिकली एक स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर है प्रोग्रेसिव, जिसमें कि इंडिविजुअल्स जो है उनको सिवियर जॉइंट और हिप पेन होती है। और सर्टेन एक्सट्रीम केसेस में तो क्या होता है कि क्रिपल्ड जो है इंडिविजुअल्स हैं उनको क्रॉल करना पड़ता है, इतनी पेन होती है, ओके। तो इसमें जो है डिफॉर्मेशन हो जाती है लिम्ब्स की। सिम्टम के जो ऑनसेट होते हैं वो प्री एडोलेसेंस एज में, जो मतलब 10 साल से कम की एज में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो रिसेंटली री इलेक्ट हुआ है यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन में 2025 से 2026 की टर्म में। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि 2005 में बनाई गई थी यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से। एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है जो सपोर्ट करती है पीस एफर्ट्स को कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में। इसमें 31 मेंबर स्टेट्स हैं, टॉप फाइनेंसिंग कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ और टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया भी जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस बिल्डिंग पीस कीपिंग का, ठीक है। लगभग 6000 मिलिट्री और पुलिस पर्सोनल जो है यूएन ऑपरेशंस में इंडिया के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो है उन्होंने राज्यसभा को ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम के बारे में बताया है, जिसको हम पहले स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस कहते थे। तो ये प्रमोट करती है इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज और एनहेंस करती है इंडिया की इमेज को ग्लोबल अरीना में। तो ये इसमें जो है 3 कंपोनेंट्स हैं मेजर। फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है अब्रॉड, ताकि पीपल टू पीपल कनेक्ट और बायलैटरल कल्चरल कॉन्टैक्ट्स जो है वो इम्प्रूव किए जा सकें। दूसरा है आपका ग्रांट इन एड टू इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चरल सोसाइटी स्कीम, जिसमें कि ग्रांट्स दी जाती हैं ताकि क्लोजर फ्रेंडशिप और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बनाए जा सकें इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में। फिर एक कंट्रीब्यूशन ग्रांट भी होती हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती हैं, जैसे इक्राम, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज फंड। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो ऑफ कोर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स जो है उन्होंने 2 डे ग्लोबल इंडिया ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएट होके। तो ये ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम एक प्रोग्राम है अंडर द एजेस ऑफ
वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स, ताकि सिक्योर की जा सके और फैसिलिटेट की जा सके ग्लोबल ट्रेड को। तो ये एनहेंस करना चाहता है इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी और फैसिलिटेट करना चाहता है मूवमेंट्स ऑफ लेजिटिमेट गुड्स को। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो एंगेज्ड हैं एंटिटीज़ जो कि कस्टम द्वारा अप्रूव्ड हैं और कंप्लाइंट है सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से, उनको ये एईओ स्टेटस दिया जाता है और फिर उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेसिकली एईओ कौन होती है? ये बिजनेस एंटिटी जो कि इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है। ओके, तो इंडिया एईओ प्रोग्राम क्या है? इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने 2011 में इंट्रोड्यूस किया। वॉलंटरी प्रोग्राम है। तो जो कि एईओ एंटिटीज़ होती हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सिंप्लीफाइड उनके लिए कस्टम प्रोसीजर होते हैं, फास्टर कस्टम क्लियरेंसेज मिलती हैं उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 30th एडिशन जो है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर का, वो महाराष्ट्र में कंडक्ट किया गया। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रमप्पा टेम्पल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं लोन्स अंडर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, रमप्पा रीजन सस्टेनेबल टूरिज्म सर्किट बनाने के लिए। रमप्पा टेम्पल, रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं इसको हम, काकटिया स्टाइल हिंदू टेम्पल है तेलंगाना में, और ये 1213 में बनाया गया काकटिया रूलर काकती गणपति देवा के पैट्रोनेज में। टेम्पल का नाम रमप्पा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो चीफ स्कल्प्टर थे वो रमप्पा थे। सैंडबॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस टेम्पल को बनाया गया है, जिसमें कि फाउंडेशन जो है वो सैंड लाइम, जैगरी और ब्लैक मायरो बैलन के फ्रूट से जो है मिक्स किया जाता है, ताकि एक कुशन की तरह काम करे इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स। 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। टॉपिक आपके एनवायरमेंट इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $98 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इंप्रूव करने के लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर्स का एक्सेस टू सर्टिफाइड डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल। तो इंडिया का ऑलरेडी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी चल रहा है, जो कि क्रिटिकल इश्यूज जो है हॉर्टिकल्चर में उनको एड्रेस करना चाहता है हाई क्वालिटी वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करके। तो इस प्रोग्राम के अंदर एनहेंस करना चाहते हैं हम यील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, डिसैमिनेट और अडॉप्ट करना चाहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़, और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इसमें इस प्रोग्राम के अंदर 9 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। रॉबस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा और अफोर्डेबल एक्सेस मिलेगा क्लीन प्लांट मटेरियल को ऑल फार्मर्स को। ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं WOH G64 स्टार। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली पहली बार साइंटिस्ट ने सक्सीड किए हैं जूम इन पिक्चर देखने के लिए, जूम इन पिक्चर कैप्चर करने में WOH G64 स्टार की, जो एक किसी और गैलेक्सी में लोकेटेड है। तो जो ये स्टार है ये मैसिव स्टार है और ये रिमार्केबल शार्पनेस इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखने को मिली है हमें यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर की वजह से इंटरफेरोमीटर ने कैप्चर की है। तो ये लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में ये हमको देखने को मिला और 1970s में इसको डिस्कवर किया गया था। लगभग 1,60,000 लाइट ईयर्स अवे है ये अर्थ से, और इसको हमने क्लासीफाई किया एज अ रेड सुपर जाइंट, और ये अपनी लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में एंटर कर चुका है। न्यू फोटो से हमें ये पता लग रहा है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Supreme Court case on the Places of Worship Act 1991. This topic is important for your social issues and governance section. So Supreme Court is deliberating on a critical case which is concerning with the Places of Worship Act of 1991, and this case has, despite being very important, it has seen minimal progress in recent years. So this Places of Worship Act, we have already discussed it several times, that it was brought in by the PV Narasimha Rao government at the height of Ram Temple movement, and the mandate of this act was to ensure that the nature of all places of worship except of course Ayodhya, will remain as they were on 15th of August 1947. So it is basically prohibiting conversion of any place of worship into another religious character as that of which existed on 15th of August of 1947. So it restricts individuals also from filing suits which may reclaim religious sites. So in the Ram Janmabhoomi case also,
the Supreme Court said that this is a legislative act, which intervention, which is preserving non-retrogression, and it is an essential feature of the secular values of India. Okay, so this act is the petitioners are saying that this act is unfairly targeting or denying the Hindus, Jains, Buddhists, and Sikhs their right to reclaim their places of worship, which were taken over by the historical invasions. And this is basically becoming an impediment to seek justice for historical wrongs. Whereas the Muslim Personal Law Board is defending this act, saying that it is upholding the secularism and fraternity. Okay. So we have already witnessing that this Places of Worship Act has been in news in several cases, not just in Ajmer Sharif case, Sambhal case, Gyanvapi Mosque case, and the Shahid Gah case. So there have been certain concerns which have been raised, saying that these ongoing surveys are part of the systematic plan to challenge the integrity of religious sites. Muslim parties are in fact urging the court to enforce this act to halt these claims. Even the Chief Justice of India, the then Chief Justice of India, emphasized on the importance of balancing faith and legality. So, Places of Worship Act has become a broader conflict, or it is reflecting a broader conflict between historical grievances and constitutional values of secularism and unity. Okay. So the next topic is the fallouts in Bangladesh. This topic is important for your international relations. So recently, Chinmoy Krishnadas was arrested in Dhaka, and he was charged with sedition for disrespecting Bangladesh's national flag. We all know that Bangladesh has an ancient Hindu, Buddhist, and even Christian community, but these minorities have been targeted. They have faced increased discrimination, and atrocities against them have been very high. So they have united under the Bangladesh Hindu Buddha Christian Okyo Parishad during the Khaleda Zia's tenure, when these atrocities reached their peak. And successive governments, despite the appeals by these minorities, have failed to address these issues. So recently, we saw the Chinmoy Krishnadas case, in which he was arrested on spurious charges, and he was arrested in while he was holding major rallies advocating for minority rights in Dhaka, Chittagong, and Rangpur. So uh, recently, uh, the chief advisor of Bangladesh, Mr. Yunus, who is presiding over this genocide of minorities, he came out and he said that he has no intention of discriminating against minority groups, despite the fact that we are witnessing routinely recurring attacks on temples and places of worship, which is basically highlighting the government's deliberate failure to restore law and order and maintaining harmony in a pluralistic society. The minorities have also raised concerns about the Yunus government's push for constitutional reforms. The Attorney General of the Yunus government uh, has said that the 15th Amendment to the Constitution of 2011, which inserted secularism in the statute, is no longer valid because socialism and secularism do not align with a demographic country in which 90% of the population is Muslim. Okay, so these remarks have fueled fears that the authoritarian Yunus government is seeking to dismantle Bangladesh's secular framework. Diplomatic exchange also erupted between India and Bangladesh with respect to Chinmoy Krishnadas case. Okay, ISKCON believers and supporters also started protesting against the Bangladesh government or the authoritarian regime of Yunus. Uh, and this protest was very aggressive outside the Kolkata Deputy High Commission of Bangladesh. Okay, so this Yunus authoritarian regime is a setback of India's Bangladesh policy, and Bangladesh has criticized India for harboring the uh, former Prime Minister Sheikh Hasina. India-backed initiatives, including Adani Group's Goda power plant project, has also been affected. Yunus government is also facing in internal instability because this authoritarian regime is backed by radical factions of terrorist groups, including the Jamaat-e-Islami, which is in fact an anti-India political party. Okay, so the next topic is silica. This topic is important for your environment section. So recently, National Green Tribunal has directed the Central Pollution Control Board to prepare detailed pan-India guidelines for silica sand mining and silica washing plants. Silica is another name for chemical compound which composed of, which comprises of uh, oxygen and silicon,
The mass of Earth's crust is about 59% of silica. Silica sand is used in buildings and roads. It is also used in grinding and polishing glass and stone. Silica gel is often used as a desiccant to remove moisture. Okay. So the next topic is high energy stereoscopic system observatory. This topic is important for your science and tech section. So scientists at the Hess Observatory in Namibia have found the most energetic cosmic rays ever detected. So Hess is basically an array of Cherenkov telescopes located in the Comoros Highlands in Namibia. So it started operations in 2003 and it observes gamma rays basically. Being in southern hemisphere, it is very well located. Because gamma rays cannot penetrate Earth's atmosphere, it detects them indirectly using their interactions with the air molecules. This observatory is operated by a collaboration of more than 260 scientists. So the next topic is Handi-Godu disease. This topic is important for your social issues. So Minister of Health and Family Welfare of Karnataka has recently directed the Health Department to conduct a scientific study of Handi-Godu disease, which is a rare and peculiar osteoarthritic disorder prevalent in Shimoga and Chikmagalur districts of Karnataka. So it's an inherited degenerative osteoarthropathy, and this is a progressive skeletal system disorder which affects individuals and they are presented with severe joint and hip pain. In extreme cases, it can lead to individuals who are made to crawl due to pain. So symptoms onset is generally at pre-adolescent age to young adulthood also. Okay. So the next topic is UN Peace Building Commission. This topic is important for your international relations. So India has been re-elected to the UN Peace Building Commission for 2025-2026 period. And this UN Peace Building Commission was established in 2005 by resolutions of UN General Assembly and Security Council. It's an intergovernmental body which supports peace efforts in conflict-affected countries. It comprises of 31 member states, including the top finance and top troop contributing countries to the UN system. And India is, of course, among the largest contributors. It currently deploys about 6,000 military and police personnel to the UN operations. So the next topic is Global Engagement Scheme. This topic is important for your art and culture and governance section. Recently, Union Minister of Tourism has informed the Rajya Sabha about the Global Engagement Scheme, which was previously known as the Scheme for Promotion of International Cultural Relations. So it promotes India's rich cultural heritage and enhances India's image in the global arena in a concerted manner. So it comprises of three components. First is the organized abroad. First is the Festival of India, which is organized abroad to promote people-to-people connect and bilateral cultural contacts. Then there is Grant in Aid to Indo-Foreign Friendship Cultural Society scheme, which which is basically grants sanctioned with the object of fostering closer friendship and cultural contacts between India and foreign countries concerned. We also have contribution grants, which are meant for the international organizations like ICROM, UNESCO, World Heritage Fund. Okay. So the next topic is Authorized Economic Operator Program. This topic is important for your economy section. So Central Board of Indirect Taxes and Customs has organized a 2-day Global India Authorized Economic Operator Program in association with World Bank. So what is an authorized economic operator? So it's a program of World Customs Organization's safe framework of standards to secure and facilitate global trade. The aim is to enhance international supply chain security and facilitate movement of legitimate goods. So under this program, an entity which is engaged in international trade is approved by customs and um, as compliant with supply chain security standards, and it is granted AEO status and certain benefits. So AEO is a business entity involved in the international movement of goods requiring compliance with provisions of the national customs law. So WCO in June 2005 to secure with a view to secure the international supply chain adopted this safe framework of standards. Okay, what is the India AEO program? So it was introduced in 2011 by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, and it's a voluntary program which provides benefits in the form of simplified customs procedures and faster custom clearances. Okay. So the next topic is Exercise Agni Warrior. This topic is important for your security section. So the 13th edition of Exercise Agni Warrior was recently concluded in Maharashtra. It's a joint military exercise between Indian Army and Singapore Armed Forces. So the next topic is Ramappa Temple. This topic is important for your
Art and Culture section. So, Union government has recently approved loans under the Special Assistance to States or Union Territories for Capital Investment Scheme to develop Ramappa Region Sustainable Tourism Circuit. So, Ramappa Temple is also known as the Rudreshwara Temple, and it is a Kakatiya style Hindu temple located in Telangana. So, this temple dates back to 1213 AD, and it has been built by the patronage of Kakatiya ruler Kakati Ganapati Deva. Okay, so the temple got its name Ramappa because of its chief sculptor named Ramappa, and this temple uses the sandbox technique in which the foundation pit is filled with mixture of sand, lime, jaggery, and black myrobalan fruit, which acts as a cushion in case of earthquakes. Okay, so in 2021, this temple has been inscribed in the UNESCO World Heritage Site status. So the next topic is Atmanirbhar Clean Plant Program. This topic is important for your environment and economy section. So recently, Government of India and Asian Development Bank have signed a $98 million loan to improve horticulture crop farmers' access to certified disease-free planting materials. So this basically aligns with India's Atmanirbhar Clean Plant Program, which is designed to address critical issues in horticulture by providing access to high quality virus free planting material to farmers. The aim is to enhance the yield of horticulture crops, disseminate and adopt climate resilient varieties, protect the ecosystem. And under this program, 9 world-class state-of-the-art clean plant centers equipped with advanced diagnostic therapeutics and tissue culture labs will be established. Robust certification system will be implemented, and it also prioritizes affordable access to clean planting material for all farmers, okay, who are involved in horticulture. So Ministry of Agriculture is implementing this through the National Horticulture Board and Indian Council of Agriculture Research. So the next topic is WOH-G64 star. This topic is important for your science and tech section. Recently, for the first time, scientists have succeeded in taking a zoomed picture of WOH-G64 star, which is located in another galaxy. So it's a massive star which has been imaged with remarkable sharpness by the European Southern Observatory's Very Large Telescope Interferometer. It dwells in the Large Magellanic Cloud, and it was discovered in 1970s. It is believed to be about 1,60,000 light years away from Earth. It is classified as a red supergiant, and this new photo is revealing that this star is entering the last stages of its life. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.